वेलकम बैक टू कोड टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग डेटा मॉडल्स इन लुकर लैब ऑफ आर्केड बेस कैंप 2026. So first we will start this lab, then we will open it in incognito window. In this lab we will be working on looker. We will come back, we'll use this username, copy it and then paste it here in the email. For the password, come back here, copy this, यहाँ पे paste करना है and then just log in. इस तरीके से आपका लुकर का इंटरफेस खुल जाएगा and come back to the lab. यहाँ कुछ थ्योरी है जो आप पढ़ाई कर सकते हैं and this is now task 1. Use SQL runner to explore available data and troubleshoot SQL queries. सबसे पहले हमें डेवलपमेंट मोड को इनेबल करना होगा. उसके लिए यहाँ पे आके हमें डेवलपमेंट मोड पे क्लिक करना है एंड उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा. देन नेक्स्ट हमें डेवलप पे जाना है एंड देन हमें SQL रनर पे जाना है. क्लिक SQL रनर. Now we have to go to settings and then click search public projects. So हमें यहाँ आना है, इस सेटिंग्स पे क्लिक करना है, क्लिक सर्च पब्लिक प्रोजेक्ट्स, देन हमें इसे टाइप करना है क्लिक एंटर. नेक्स्ट come back to this lab or data set, copy this carefully, paste it here. It may not work. Alright, it is now selected. We'll come back to this lab. We have to add this query to the SQL query window. Now run. As you can see, the error message is displayed. नेक्स्ट हमें इस क्वेरी को कॉपी करना है एंड देन रन करना है. ये क्वेरी भी फेल हो जाएगी. लेट्स ट्राई एंड यस, इसका एग्जीक्यूशन भी फेल हो चुका है. नेक्स्ट हमें इस पे आना है, हमें इसे कॉपी करके रन करना है. इस क्वेरी का रन होना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसे पेस्ट करेंगे एंड देन रन करेंगे. इसके बाद यहाँ हमारा रिजल्ट्स आ चुका है, तो हम एक बार लैब पे वापस जाएंगे. लैब पे वापस जाने के बाद हम एक बार यहाँ पे से क्वेरी को सेव करेंगे सेटिंग्स पर जाकर, जिसके लिए हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे. देन वी विल गो टू ऐड टू प्रोजेक्ट. देन हम इसमें जाके इधर वापस आएंगे लैब में. नेक्स्ट हमें इधर सेटिंग्स पे आना है. रन करने के बाद यहाँ पे हमें ऐड टू प्रोजेक्ट करना है. आफ्टर क्लिकिंग ऐड टू प्रोजेक्ट हमें क्विक प्रोजेक्ट के लिए qwiklabs कॉमर ई कॉमर्स सर्च करना है, जो कि पहले से सिलेक्टेड है. तो हमें यहाँ पे आके फिर व्यू नेम में इसे डालना है. इसमें हम इसे कॉपी करेंगे एंड देन हम इसे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एंड उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद यहाँ पे एक अलग इंटरफेस आ जाएगा, जिसके बाद हमें उसको ड्रैग करके व्यूज फोल्डर में लेके जाना होगा. एंड देन हम एक बार लैब पे वापस आएंगे एंड व्यूज को एक बार ओपन करेंगे एंड इसको होल्ड करके हम इसके अंदर लेके आएंगे एंड ये आ चुका है. अब हम एक बार वापस जाएंगे. अब हम डिलीट द कोड लाइन फॉर लिमिट 10 फ्रॉम द एसक्यूएल पैरामीटर. नाउ ओपन दिस फाइल. नाउ remove this limit 10. Next we will go back to the lab again, click save changes and then click validate lookml.
हमारा ये वैलिडेट हो चुका है, तो हम वापस आएंगे. नाउ वी विल यूज दिस. हमें इसे यहाँ से कॉपी करना है. एक्सप्लोर इवेंट्स की डेफिनेशन ढूंढनी है इन द ट्रेनिंग ई कॉमर्स मॉडल फाइल. नेक्स्ट हमें इसको हमें इसे कॉपी करना है. हम एक्सप्लोर इवेंट्स की डेफिनेशन को ढूंढेंगे जिसमें ये रही वह डेफिनेशन. नेक्स्ट हमें यहाँ वापस आना है. देन हमें इस कोड का यूज करके इधर एक नया जॉइन क्रिएट करना है. तो उसके लिए हम यहाँ इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे. देन लैब पे वापस आएंगे एंड देन वी विल सेव चेंजेस एंड देन वैलिडेट लुक एमएल एंड द वैलिडेशन इज डन. इसके बाद हम इसको कमिट चेंजेस एंड पुश करेंगे. मैसेज में आप कुछ भी डाल सकते हैं. क्लिक कमिट and then click deploy to production. Let me check my progress. And it is completed. Now on to the task 2. We have to use the lookml validator to test syntax and validate relationships defined in the model. तो हम qwiklabs e-commerce प्रोजेक्ट पे users.view को ओपन करेंगे जिसमें हमें लास्ट डायमेंशन में अराउंड लाइन 88 एक न्यू डायमेंशन क्रिएट करना है. कॉपी दिस एंड देन हमें एक न्यू डायमेंशन ऐड करना होगा अराउंड लाइन 88 यानी कि इधर. ऐड दिस. Then click Save Changes. Now we have to click Save Changes and then validate lookml. And lookml error is here, just as predicted here. अब हमें उसे अपडेट करके इसमें कर देना है कन्वर्ट. सो वी विल रिप्लेस दिस. एंड ये एरर था जो कि अब रिजॉल्व हो चुका है. क्लिक सेव चेंजेस एंड देन वैलिडेट lookml. एंड lookml फाइनली वैलिडेट हो चुका है बिना किसी एरर के. नेक्स्ट हमें इसे कॉपी करना है एंड यहाँ पे फिर भी एक एरर आ चुका है. तो हम एक बार यहाँ पे अब ट्रेनिंग ई कॉमर्स मॉडल पे आएंगे एंड देन ज्वाइन यूजर्स के नीचे हमें आना है यानी कि यहाँ. देन नेक्स्ट ज्वाइन यूजर ऑर्डर लाइफ टाइम. क्लिक सेव चेंजेस and then click validate lookml. Alright, now all errors are resolved. अब हम एक बार फिर से commit, push and deploy करेंगे. सबसे पहले commit changes, again कोई भी random message, click commit and deploy to production.
and it's completed. Now check your progress, and it's completed. Now on to the task 3, हमें explore में जाना है. So open looker in another tab by copying this to here, then go to explore, click order items. उसके बाद हम यूजर ऑर्डर लॉफ्ट टाइम में जाके इन डायमेंशंस को एक बार देखेंगे. देन हम वापस आएंगे. नाउ हमें यूजर ऑर्डर लाइफ टाइम व्यू पर फिर से जाना होगा. दिस इज इट. नेक्स्ट, हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की डिफाइंड नहीं है. अगर हम इसे यहाँ रखेंगे तो एज यू कैन सी, देन हम इसे कॉपी करेंगे. ये यूजर आईडी का है, तो हम इस डायमेंशन को अपडेट करेंगे. केयरफुली कॉपी इट एंड रिप्लेस इट. प्राइमरी की आ चुकी है. क्लिक सेव चेंजेस. नाउ वैलिडेट लुकेमल and it is done. Now under users dimensions we have to click average sales and then click run. हम यहाँ वापस आएंगे. Under users we have to click average sales, then you have to click run. And it shows an error. Next we have to go here. इस एरर के बाद हमें ओपन को एक अनदर टैब में ओपन करना है. Then click on explore, events. Next हमें यूजर्स पे जाके एवरेज सेल्स पे क्लिक करके रन करना होगा. Go on users, average sales, then click run. क्वेरी सक्सेसफुल हो चुकी है. नेक्स्ट हमें ट्रेनिंग ई कॉमर्स मॉडल को ओपन करना होगा. तो हम इस पे जाएंगे. Then we have to update the join for user order lifetime. Copy this, find it. This is it. Now replace it carefully and save changes. Then click validate lookaml. अब हमें वापस ऑर्डर आइटम्स पे आना है. Reload it. Now select average sales in descending order. For descending order, use this. Click it here. Next, we have to add these dimensions: ID, state, country, and age. ID, state, country, and then age.
remove this one. So उसके लिए हम यूजर्स पे जाके यूजर ऑर्डर लॉट टाइम पे जाएंगे एंड इसको हटाएंगे एंड ये हमारा आ चुका है. नेक्स्ट फॉर रो लिमिट एंटर 10 एंड रन. तो हमारे पास ऐसे डेटा आ जाएगा. नाउ हमें इसे एज अ लुक सेव करना होगा, तो हम इधर वापस आएंगे, क्लिक सेटिंग्स, सेव एज अ लुक, टाइटल में हम उसे पेस्ट करेंगे, देन क्लिक सेव एंड व्यू लुक. एंड ये आ चुका है. चेक योर प्रोग्रेस. नेक्स्ट हमें यूजर्स डॉट व्यू पे जाना है एंड एवरेज सेल्स के डायमेंशंस को मॉडिफाई करना. सो पहले हम इसे कॉपी करेंगे, देन इधर वापस आके हम यूजर्स डॉट व्यू पे जाएंगे. नाउ अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद दिस. हम इसको केयरफुली कॉपी करेंगे एंड पेस्ट इट, देन वी विल क्लिक सेव चेंजेस एंड वैलिडेट लुक and there are no errors. Now we will come back to here and then we have to open a new looker window in a new tab and click develop content validator. तो हम एक बार फिर से इसको यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे लेके आएंगे, देन इसके ओपन होने के बाद हम क्लिक करेंगे डेवलप. डेवलप के बाद हम क्लिक करेंगे कंटेंट वैलिडेटर पे. नेक्स्ट हमें यहाँ पे आके वैलिडेट पे क्लिक करना है, तो विल क्लिक ऑन वैलिडेट. नाउ क्लिक find and replace in all content. Click this. Now for the field name, we have to enter this, copy this and then come back to here, paste it. And for the replacement field name, you will come back to this lab and copy this carefully and then you have to paste it here and then click replace field name. Then click OK. We'll come back to the lab and now click validate again. As you can see, there is no errors this time. So we will come back here. अब हम एक बार users डॉट व्यू पे वापस आएंगे and then we will click on commit changes and push. Then for commit changes we can select any messages like code to cortex, here and then click on commit. commit करने के बाद हमें deploy to production पे click करना है and then यहाँ आके check my progress करना है. And congratulations, the lab is complete. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such videos. Also join our WhatsApp community to stay updated. Now click on End Lab and move on to our next lab.